Today in this video we are going to learn how to plan the essay, not just that, even how to develop ideas. Yes, seems quite interesting. Okay, so first let us understand. Many of us think that planning is it's okay, we should avoid planning, but no. When we plan our essay, we are actually understanding our question. Not just that, even we get in real we get connected with what sort of ideas we are having, plus we are also able to organize our ideas in a proper flow. So if this is structurized, then the content that I am going to write is definitely going to be very strong in terms of ideas, very strong in terms of connectivity, which now these are the two factors which are going to give me scores under task response and coherence and cohesion. So out of 4, if my planning is taking care of 2 factors of my scoring rubrics, don't you think we should plan our essay? It hardly takes 5 minutes. Even the planning helps me to build a strong introduction. Why? Because I have completely understood my idea about the question. I have also understood the question completely. So that is definitely going to give rise to a very strong introduction. So always have habit of planning your content. Let us understand how to plan a content. Now here on the screen you might be seeing body 1, body 2, idea 1, 2, plus, minus. What are they? This is a kind of plan that you should make. Now this small structure actually does wonders. Let's understand how. Suppose I have read a question and I have thought that this part of my question I am going to write in body 1 and this in body 2. So then now I have just separated, or I have divided the question into 2 parts. But to support my view, to support my stand, the ideas that I am going to present should be actually very strong. I should explain you in this in a very simple way. Suppose आप किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं या आप किसी को अपना पॉइंट प्रूव करते हो, तो तब आप क्या करते हो एग्जैक्टली? आप सामने वाले को आपका परसेप्शन प्रूव करने के लिए आप सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सामने रखते हैं, उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं. In that you naturally avoid using less strong ideas. So बस ये का ये तो ऐसे है. जब भी आप आपके स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरे आइडियाज़ कितने लाउडली मेरे परसेप्शन को, मेरे स्टैंड को, मेरे साइड को प्रूव करने में सक्षम है. How much capable are they to prove what I am thinking, what I am believing? So friends, let's understand this structure. Suppose I am planning, I am structurizing my body 1. So here only itself I will note down the idea. Means जनरली आइडिया नोट डाउन करने का कहा मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा सेंटेंस लिख दूंगी. नो, आई जस्ट राइट 1 or 2 words. जैसे मान लो आई कैन से हेल्थ एंड एजुकेशन, सो आई जस्ट राइट हेल्थ and in my idea 2 I'll write education. That's it. क्योंकि वो परसेप्शन तो मेरे माइंड में है, वो क्लियर है. अगेन वहीं पे मैं मेरे एग्जाम्पल्स भी लिख दूंगी.
हेल्थ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया वो भी एक ही वर्ड में आई राइट डाउन अंडर माई फर्स्ट आइडिया. सेम गोज़ टू माई सेकेंड आइडिया and the same thing I'll follow in my body too. Now if you closely see, I have written plus and minuses at 3 places, which means you have to develop a strong connectivity at 3 different places. First is between the idea 1 and idea 2 of body 1, second between the two bodies, and third between the first and second idea of the body 2. Now what are these plus and minuses? If I want to say and, means I can represent and with plus and I'll represent but with minus. Okay, so for and, now I know, like मैंने ये मेरे ब्रेन में प्रोग्रामिंग की है कि जहाँ मुझे दो आइडियाज़ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो मैं प्लस से इंडिकेट करूँगी, अगर नेगेटिव रिलेशन है तो मैं माइनस से इंडिकेट करूँगी. सो जैसे ही मैंने प्लस लिखा या माइनस लिखा, while I am writing my content, it will hit my brain that the kind of connector that I am going to use. If I have written and or if I have written plus, I'll be using the connectors such as moreover, furthermore, in addition to. But if I have written minus, then I'll pick such kind of connectors such as however, nonetheless, nevertheless and so on. So गलती से भी मैं गलत कनेक्टर नहीं यूज़ करूँगी. दूसरा, आपको पता है कि जब मैं पैराग्राफ करती हूँ मेरे कंटेंट को, तो कभी भी मेरा बॉडी 1 बॉडी 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, वरना वो प्रॉपर एक ऐसा सीक्वेंस नहीं दिखेगा. सो सपोज़ मान लीजिए कि जब मैं प्लान बनाने बैठती हूँ, बॉडी 1 में मेरे को सिर्फ एक ही आइडिया मिलता है, दूसरा आइडिया मिलता ही नहीं है. लेकिन बॉडी 2 को लिखते टाइम मेरे पास 2 आइडियाज़ है. So what I'll do is I'll swipe. I'll take that section as body 1 and the previous body 1 I'll convert that into body 2. So do you actually understand how important is planning? Yes guys. Okay, हम थोड़ा इसको और समझते हैं कि suppose अगर मेरे पास आइडियाज़ ही ज़्यादा नहीं है, मेरे पास बॉडी 1 के लिए एक आइडिया है, बॉडी 2 के लिए शायद एक आइडिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे वर्क करें. सो हमेशा एक चीज़ याद रखो, और दिस शुड बी द लास्ट थिंग यू शुड बी डूइंग. ओके, सो इफ़ यू फोकस ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ essay, द क्वेश्चन always targets 2 things. First, every question will target the citizens or the citizen of a country or world and the country or the world. Again, understand the question, that what segment of society is the question targeting. Is the question targeting children? Is it targeting youth, elderly people? Whom is the question targeting? Then definitely every question has to do some or the other thing with the country. So these become your supporting ideas. Other than this, even if you are able to develop the connectivity of past, present and future. So now this I am giving you I can say an idea, a hint, only for a situation when you think that now you don't have any idea. Again, here I would like to point that don't have a perception कि यार मेरे तो सारे क्वेश्चन में कोई आइडिया आते ही नहीं है. नहीं, जो भी क्वेश्चन ऐसे में आते हैं वो आपके लाइफ के आजू बाजू ही रिवॉल्व करते हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करते हैं, हेल्थ को टारगेट करते हैं, मीडिया है या लॉ एंड ऑर्डर है, इकोनॉमिक्स है. सो ये सारे जो सेगमेंट्स है, यू आर नॉट अनअवेयर ऑफ दीज सेगमेंट्स. सो डोंट बी अफ्रेड कि ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे नहीं पता हुआ तो मैं क्या करूँगी या तो मैं क्या करूँगा. ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है.
हम सिर्फ ऐसा सोच के जाते हैं. Okay guys, let us move forward. Now here you have a question on the screen which says, there is a very simple question. It says, should there be zoos in 21st century? What is your opinion? क्या 21st century में zoo होने चाहिए? What is your opinion? Now I would like that you guys should pause the video and try this plan. Try the plan of that, the one that we said, body 1 and body 2 kind of. तो वो प्लान आपके सामने रखिए और फिर ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप से, अपने थॉट के हिसाब से उसको स्ट्रक्चराइज करें. एंड देन लेट अस डिस्कस. Okay guys, so let us actually understand the question. सबसे पहले तो मैं सोचूंगी कि should there be zoos in 21st century? What is your opinion? अगर मैं सोचूं कि भाई zoo होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए? Now that is how I develop my ideas. If I say yes, then immediately my mind works like, why yes? What will happen if I say yes? And if I say yes, then how is it going to positively affect to society or animals? If I say no, then I'll think that why? How is it negatively going to affect the society or the animals? What will be the consequences? If I say partial, then again both the sides. So when I am asking my own idea, questions after questions, the answers to those questions are the ideas to my question, or are the ideas of my essay. Now in case here, if I say that I think that zoos should be there, so then I'll think that why should be zoos there? How are they helpful? सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ कि zoo होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, उससे फ़ायदा किन को है? So obviously it is beneficial for animals and it is also beneficial for people. So if I talk about its benefits for people, what kind of benefits does a zoo give to an individual? तो जो हमको जनरल थॉट आता है कि भाई नहीं जू होगा तो वहाँ पे देश विदेश के एनिमल्स होंगे तो जनरेशन को पता चलेगा कि अच्छा ये काइंड ऑफ एनिमल्स है. सो उससे क्या होगा? उससे उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. They'll understand the lifestyle, or they'll at least have a closeness with the nature, with how the animals are surviving, how are our activities as human affecting their life cycle. Okay, अगर ये एक पार्ट मैंने कहा, अब यही चीज़ कंट्री को कैसे अफेक्ट करेगी? अगर कंट्री की बात करूँ तो जो कंट्री के एनिमल्स है, जो स्पीसीज़ है, वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे. दूसरा, कंट्री या अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ एकदम बेस लेवल पे, तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्ट मनी फ्रॉम देयर. Now if I talk about the benefits that a zoo provides to animals, so I can definitely, first thing that comes into my mind is the zoos that are currently like they are present currently, they are not like those past वाले stereotype zoos जो छोटे एरिया है यहाँ पे जहाँ पे एनिमल्स को मिसट्रीट किया जाता है. लेकिन आजकल के zoo they are quite spacious, there are quite I can say ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, और द एनिमल्स आर वेल फेड, दे आर टेकन केयर ऑफ मेडिकली.
सो उनका अच्छी तरह से देखरेख होता है, प्लस द स्पीसीज विच आर मूविंग टूवर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट, दे कैन बी सेव्ड, their population can be increased. So these are the benefits animals get through zoo. So I think that I have developed my ideas. But if I think that no, zoos shouldn't be there because the animals have to have their own liberty of living, they should be kept in their own surroundings, they should grow naturally instead of being fed, their habit is to hunt, so that is what they should do instead of just sitting and getting the food, which is spoiling their nature, which is spoiling their even health. So for example, if I say that zoo नहीं होने चाहिए, तो सबसे पहला टारगेट है मेरे लिए zoo. ज़ू होने से होता क्या है, ज़ू होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी भाई ज़ू होगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पे एनिमल की लिबर्टी या उनका लाइफ जीने का तरीका बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. If humans love to live on their own way, the animals should also have that right. That is what the baseline is. Apart from that, मैं मेरे पॉइंट को ऐसे करके भी सपोर्ट कर सकती हूँ कि जनरली जब लोग ज़ू में जाते हैं तो मोस्टली चिल्ड्रन और आई कैन से यंगस्टर्स और टीन्स, they make irritating noise, they bang the cages, which actually annoys the animals, and that is not how they should behave. So again, the nature of animals is affected negatively. एक तो इस वजह से भी ज़ूज़ नहीं होने चाहिए. अच्छा, ज़ू नहीं होंगे तो लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे कहाँ से? So guys, we have a solution for it: sanctuaries. Yes, so I can say I have a strong point here saying that the national park, the sanctuaries, which can be the potential medium to save the nature, preserve the lifestyle of the animal, and at the same time they also allow the tourists to go close inside the forest, be with the nature, see the animal or observe the animals in their natural habitat. So which is better? Obviously अब ऐसा लगता है कि sanctuaries better है zoo से, because there even their health is taken care of. So why to capture them and cage them in zoo when we are having a sanctuary? So जब मैंने ये brainstorming की तब मुझे पता चला यार मेरा strong point तो ना बोलने में है, and I have developed more strong ideas when I have denied to the question. So अगर मैं जिस बैठते ही ऐसे हाँ बोल के मैं एक्सप्लेन करने लगती तो शायद मेरे कंटेंट में उतना दम नहीं होता. So friends, हाँ, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से डेवलप करनी होगी. Every day you should sit and practice doing this for at least 4 to 5 essays. Like, let me tell you guys, just such practice for a week will enable you, will strengthen your brain to develop ideas, structure your essay in just 5 minutes. Yes, so always have habit of structuring your essay. Okay guys, so all the very best for your practice.